हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक आईपीओ जो अभी आने वाला है बिटवीन 6 to 8 जून के बीच में, जिसकी विंडो है और आईपीओ का नाम है IKIO लाइटिंग लिमिटेड। दिस इज द नेम ऑफ द आईपीओ। ये कंपनी जो है एलईडी लाइट्स बनाती है एंड दिस कंपनी इज एक्चुअली व्हाट डू यू से इज अ मेक इन इंडिया कंपनी, राइट। इसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ना मैं इसमें आपको बाय की रिकमेंडेशन दूंगी, ना मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द फंडामेंटल्स विद यू। सो द फर्स्ट अबाउट द कंपनी, ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी की मैन्युफैक्चर के लिए ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। In its journey of over 7 years, the entity focused on providing sustainability and low energy LED products to help India meet sustainability goals. The product portfolio of IKIO can be categorized as LED lighting, refrigerator lights, ABS, which is acrylonitrile, butadiene, styrene, piping and other products. So basically अगर आप देखेंगे last 7-8 साल में LEDs बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हैं। They are low energy consuming bulbs. They are replacing the conventional bulbs now. And this company has been a very big contributors towards replacing conventional bulbs into LED bulbs. The company is primarily on original design manufacture, which is ODM. They design, develop, manufacture and supply products to customers. Thereon, the customers further distribute the products under their own brands. Alongside, they also work with customers to develop, manufacture and supply products as designed by the customers. The company's LED lighting offerings focused on the premium segment and include lighting fixtures, accessories and components. The products are designed and created to cater the distinct requirements and expectations of the customers. Now, overview of this industry, एक बार पूरा overview भी ले लेते हैं. The global electronic manufacture services market is traditionally composed of companies that manufacture electronic products, predominantly assembling components as printed circuit boards and box builds for major brands. अगर हम नक्शल में इस कंपनी को देखते हैं तो its top line and profit after tax have grown at 25 to 32% per annum respectively. Over year 2022, in addition, it has maintained the highest ROE in its segment. This is a very positive point. पूरे segment में इनका return on equity has been very high. Then एक और important point है इनका growth का कि इनका पूरा supply chain जो है localized है. They are not dependent on China for manufacturing their products. Then valuation. The stock will be priced at the P of about 78, which is lower than the P. The median P is about 52, although it's not lower than the median, but lower than other peers. Now, overview of the IPO. The IPO proceeds will be utilized to develop and expand, to deliver and expand its existing facilities. The company operates in a growing industry. However, it faces significant competition from its peers. ये एक इसका drawback है. There is a huge competition. And दूसरा ये है कि जो भी लोग पैसा इकट्ठा करेंगे वो utilize करेंगे जो existing products हैं उनको deliver करने के लिए और अपने business को expand करने के लिए. इनकी strength क्या है? अब इनकी strength के ऊपर बात करते हैं. They have a long-term relationship with a company called Philips. You know that Philips is one of the top major brand for providing electronics and the bulbs, etc. They have a long-standing relationship with them. Second strength is that the backward integration. It manufactures all the mechanical components required for making LED lights except diodes and resistors at its facilities. This gives the company better control over its supply chain and higher margins. अगर कोई कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, सारे प्रोडक्ट्स खुद बना रही है और पूरी सप्लाई चेन के लिए इनको किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है. ऑलमोस्ट लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर. इनकी वीकनेसेस क्या है? अब इनकी वीकनेसेस के ऊपर बात करें तो इनकी रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन. पहले इनका जो रेवेन्यू था ना वो सारा फिलिप्स इंडिया से आता था. Philips India provided them almost like 90% of the business. However, in the same, this business has now come down to 70%.
एक बड़ा बिजनेस जो था इनके पास उस 90% से 70% पे आ गया है, तो ये एक इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं इनकी आईपीओ के डिटेल्स की। तो टोटल आईपीओ साइज को 607 करोड़ का है। अनसेल पे जो ऑफर है वो है 257 करोड़ का। फ्रेश इश्यू है अबाउट 250 करोड़ का। प्राइस बैंड है 270 से 285 रुपीज का। सब्सक्रिप्शन डेट्स हैं 6 से लेकर 8 जून 2023 एंड पर्पस ऑफ इशू इज टू पे डेट एंड फंड केपेक्स। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। After the IPO, the market cap will become almost like 2200 crore. Net worth will become 477 crores, and promoters holding is right now will be 72.5%. PE ratio will be 78.6, and price to book value will be about 4.6. So एक positive point जो मुझे लगता है अभी price to book value is very very reasonable. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका ROE जो है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर हम लास्ट 3 साल का एवरेज निकालते हैं, इट हैज बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग. आई जस्ट मार्क इट फॉर यू. So see here, this is the ROE for the last 3 years. It has been continuously, it's not been growing, but it is almost like about 45%. अगर हम बात करते हैं कि what is happening to their ROCE भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन है, बट मीडियन ROE is about 54%. EBITDA margin अगर हम देखें तो कांस्टेंट है at about 17.2 and debt to equity ratio will become 1:1. अब इस आईपीओ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, मैं बिफोर आई गो ऑन, मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया था जो हमने पोस्ट नहीं किया, रेमस फार्मास्यूटिकल के ऊपर बनाया था. एंड इट्स बीन अबाउट 5 days. रेमस फार्मास्यूटिकल जो है अपर सर्किट में ही लॉक हो रहा है. तो कुछ कहा नहीं जा सकता है. मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी भी आईपीओज में अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स वेरी अनसर्टन. पहली बात तो ये नहीं पता है कि एलोकेशन होगा कि नहीं होगा. दूसरी बात, प्रीमियम पे खुलेगा कि डिस्काउंट पे खुलेगा, वो नहीं पता होता. तीसरी बात ये है कि आई लाइक टू सी इट फॉर सम टाइम, मतलब मुझे कम से कम 6 महीने तक उसको देखना होता है, हाउ द आईपीओ इज डूइंग, एंड आफ्टर दैट ओनली आई प्रेफर टू टेक एन एंट्री. तो मैं अपने सामने इस कंपनी आईक्यू के फाइनेंशियल्स रखती हूँ. तो पहली इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव है. स्कोर केवल 2 है 6 में से, विच इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर. अगर हम इनकी बात करें ROE एंड ROCE की, तो दे हैव बीन ग्रोइंग ओवर द इयर्स. Was the last 3 years operative cash flow positive? 20 में पॉजिटिव था, 21 में पॉजिटिव था, बट 22 में नेगेटिव है. दैट्स अ बिग नो, राइट? Is the net debt to equity ratio less than 1? No, in 2022 it's almost like 1:1. Is it free from reliance on huge market capital? The business requires huge market capital for its daily day-to-day operations. So that's again a big no. At least particularly for me, I'm not interested in such businesses which require heavy cash flow every single day. I in fact don't like stocks which manufacture something. But anyway, can it run its business for 3 years without external funding? So while the IPO proceeds would help deliver partially and fund capex, the company would still need external funding. So that's again a no. Then contingent liabilities less than 25% of the equity. Yes, that's a positive that they have lesser liabilities. Okay, इसके बाद आते हैं valuation पे. Operating earnings yield 8%. So, which is again a no. 1.6% EBITDA divided by enterprise value in December 2022. That's a no from scoring method. Then price to earning is less than the peers median. That's a positive one. Price to book value is less than the average peer value, which is also a positive sign. So, अगर हम बात करें कि financials की, तो there are 2 scores, 2 positives and 4 negatives. अगर हम valuation की बात करें तो 1 positive and 2 negative. अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं. इस आईपीओ के इशू का साइज क्या है? द आईपीओ comprises of fresh equity issue of up to 350 crore and offer a sale of up to 90 lakh shares. Now selling shareholders under the OFS, which is offer for sale, promoters Hardeep Singh will offload 60 lakh shares and Surmeet Kaur will sell about 30 lakh shares. Price band, this company is Noida based and
company has a fixed price band of 270 to 285 per equity share. Investors can bid for minimum of 52 shares in a lot of multiples thereafter. At the upper end of the price band, the company plans to raise about 607 crores. उसके बाद financial performance, IKIO Lightning Limited's revenue from operation on a pro forma consolidated grew 55.47% from 213 crore in year 2021 to 331 crore in year 2022. The profit after tax has grown by 75% from rupees 28.8 crores to 50.5 crores. The company on a pro forma consolidated basis has returned a net worth of 46% against some of the listed peers. So ये एक इसका I always believe कि जब भी कभी IPO आ रहा होता है ना तो थोड़े से उनके financials tweaked होते हैं. I would not rely on these financials. I would like to see what is happening. And एक और मेरे लिए factor होता है to see what is happening in the grey market, right? उससे पता लगता है कि how the markets are responding to this particular offer. Next point is objects of the offer. The net proceeds from this public offer will be used to repay borrowings, invest in its subsidiary, IKIO Solutions for setting up the new facility in Noida, and other general corporate purposes. Booking, running, lead managers. Motilal Oswal Investment Advisors is acting as the book running lead manager of the issue, while KFin Technology is the registrar. Then issue structure. About 50% of the offer is reserved for qualified buyers, QIB, and 35% of the issue is set aside for retail investors and 15% for non-institutional investors. So overall the product portfolio is looking neutral to strong. और अब अगर बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की तो आपके सामने चार्ट है 31 मार्च 2020 को एसेट्स थे 144.8 करोड़ एंड देन आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर एसेट्स ग्रो करे हैं, टोटल रेवेन्यू ग्रो करा है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो करा है, नेट वर्थ ग्रो करी है, एट द सेम टाइम बोरोइंग्स हैव आल्सो ग्रोन, राइट. फिर उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ROE, ROC, डेट टू इक्विटी रेशियो, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड. And I have also discussed with you all the important parts of the offer. So there is no offer sell that makes IPO interesting. QIB, which is the qualified institutional buyers quota, is about 28%. Normally it has been seen that IPOs where QIB has good holding, they perform well after listing. So ये एक इसका positive point है. QIBs are a category of investors in the initial public offering of a company. HNI quota is about 24.4% and retailers have about 50% quota. Okay, now quickly एक और बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट में ये स्टॉक कैसा करें. Before applying for any IPO, we should also check the grey market premium. Grey market premium tells us about the demand and also we get an idea of listing gains. When I'm making this video, the grey market price is about 288. एक बार quickly I just want to show you that the band in which this stock is coming is about 270 to 285, but grey market में ये 388 rupees पे available, which is roughly about 36%. That's the gain that can be expected if on the day of listing. IPO is only opening on 16th June 2023, but already there's a demand in grey market that gives an indication that this IPO can perform well at listing. So there, before applying for IPO, you must check QIBs, HNIs, and retail subscription data that give you an idea about the performance of the IPO on the listing day. So अगर आप देखें मोटा मोटी स्टॉक जो है न्यूट्रल से स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा यूनिक है, बट मेरे लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग और उसमें जो कैपिटल डिप्लॉय होती है वो मुझे जो है ना I really don't like such kind of products. But अगर देखा जाए किसी को लिस्टिंग के लिए लिस्टिंग गेन के लिए लेना है, one can apply for it. And grey market में it's on a 33%, 36% premium. So that's an indication that on the day of listing, there may be some premium that you may gain by applying for this particular IPO. So आप अपने आप डिसीजन लीजिए, बट क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ, उनकी वेबसाइट भी आपको दिखा देती हूँ, so that you can, ये इनकी वेबसाइट है IKIO की, and you can see what kind of products do they make.
They are into manufacturing of these LEDs, which basically we use in our house and everywhere. You see the LEDs used. They are manufacturer of those LEDs, right? So this is a website. You can do your own research. This is not a recommendation of buy or sell, but you can decide whether you would like to invest in this particular stock or not. I have just shared all the fundamentals. Financials की बात करें तो there are 2 positives and 4 negatives. Valuation की बात करें तो 2 positive है, 1 negative है. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम पे है, और दूसरा QIBs आर प्रीटी मच heavily invested. About 28% investment will be from QIBs. So these are, and HI is about 10-15% is HNI's investment. So these are some important points about this stock. If you're interested, you can apply for it. And this is from my side. Do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care. See you in the next video.